Good morning, dear students. Jai Hind to all. We are going to continue with Chapter 6 Agriculture of Geography, Class 8th. Students, we have already read about nomadic herdings. We are going to continue with intensive subsistence farming. I have already explained you in Zoom also. The term intensive subsistence farming means where a farmer has a small land but he do all possible ways to get the maximum possible profit out of it. Means where the farmer tries to get maximum possible output from a small piece of land. It is prevalent in thickly populated areas. Thickly populated areas का मतलब होता है बेटा जहाँ पर population, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. कौन कौन से रीजन्स आते हैं इसमें? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड इंडिया. This form of agriculture involves the use of small piece of land, large quantity of human labor and simple tools. Farm machinery is rarely used because it needs a lot of investment. तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं पॉसिबल हो सकता, इसलिए फार्म मशीनरीज जो होती हैं वो कभी कभी यूज़ करी जाती हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू परचेज. Due to the long growing season and fertile soil, the farmer is able to grow 2 to 3 crops annually on the same piece of land. That means for the whole year he doesn't produce a same kind of crops. वो अलग 2 or 3 टाइप्स की क्रॉप्स वो कर सकता है ऑप्ट कि वो कौन सी कब ग्रो करना चाहता है अकॉर्डिंग टू दी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. 2 or 3 crops annually on the same piece of land by using high yield variety of seeds, organic manures, chemicals and fertilizers. Rice is the main crop. Other crops include the wheat, maize, pulses and oilseed. Alright, understood? Let's proceed with commercial farming. At page number 176, you can see the picture of the intensive subsistence farming where lots of people are doing their work on a field, on a piece of a land. All right. What do you mean by commercial farming? Commercial farming means crops that are cultivated and animals are reared for profit. It is the farming system that is practiced for earning profits. The main purpose is to earn profit. कमर्शियल, द नेम itself suggesting कमर्शियल मीन्स कोई भी प्रोडक्ट को बनाना और उसे मार्केट में सेल करना जस्ट फॉर द रीजन टू गेन प्रॉफिट. Commercial farming is carried out on large farms with high investment in terms of high quality of seeds. High investment, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है. हाई क्वालिटी सीड्स ली जाती हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत बढ़िया लिए जाते हैं, एफिशिएंट लेबर्स, लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स एट द सेम टाइम, लेटेस्ट मशीनरीज एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन. Commercial farming includes some of the farmings which we'll discuss and we'll continue from the book, page number 176. Commercial farming includes extensive farming, mixed farming, plantation farming, dairy farming, pastoral farming, orchard farming, horticulture, market gardening. These are the points which come under the commercial farming and one by one we are going to discuss about it. The first is the extensive farming which is practiced in the countries where abundant land is available. Abundant means बेटा बहुत सारा, कोई कमी नहीं होगी. Available for agriculture and the region is sparsely populated. कहीं कहीं population होती है, sparsely populated होता है बेटा, एक ही जगह सारी population नहीं रहती, वो जगह जगह होती है. फॉर एग्जाम्पल एक विलेज कहीं है जहाँ पर 300 to 400 जो लोग हैं वो रहते हैं, उनका 300-400 population है. फिर द सम किलोमीटर ऑफ द लैंड इज़ फ्री, उसके बाद फिर population है कुछ, दैट इज़ कॉल्ड द sparsely populated area. Under this system of farming, capital and labor is used is very less as compared to the land is cultivated. The farming is highly mechanized so that higher yield is received. बिल्कुल अच्छी लेटेस्ट मशीन्स को यूज़ करा जाता है ताकि हायर यील्ड मीन्स अच्छा आउटपुट मिले हमें, ताकि हम प्रॉफिट गेन कर सकें. Wheat is the major crop grown in this type of farming. Other crops are, wheat is the main and the other are oats, barley, rye, flax, potatoes and root crops. Extensive farming is practiced in prairies region of North America. We have already read about this in 7th standard also. Prairies region, long vast region of land covered with crops. आपने prairies region को पढ़ा है and you have read about steppies also.
of North America, the pampas of South America, and steppes of Eurasia, and the downs of Australia. Downs of Australia means down the hill बहुत सारे landforms ऐसे हैं जिस पे cultivation करी जा सकती है. All right, understood? Good. We are now going to mixed farming, the next topic, which comes under the commercial farming. Mixed farming includes cultivation of food crops and rearing of animals on the same field. You can see the picture on the screen. This is a picture of mixed farming. जिसमें आप देख सकते हैं हाउस होल्ड भी है, द हट इज़ देयर, और एनिमल रेयरिंग भी है. स्मॉल ग्रेन्स कहीं पर ग्रो कर रखा है, कहीं मेज़ ग्रो कर रखा है, मेज़ कॉब है कहीं पर, मैनुअल भी है, मैनुअर भी है, फर्टिलाइजर्स भी है, एवरीथिंग इज़ देयर. So, I repeat from the book, this is mixed farming includes cultivation of food crops and rearing of animals on the same field. Cattle are reared for milk and meat. This is done to support the family as farmer not very big, though modern machinery and high yielding seeds, fertilizers are used. See, good machines, manures, and the fertilizers are used, but at the same time जो families हैं वो ये opt करती हैं कि हम अपने छोटे से लैंड पर ही एनिमल रेयरिंग भी करें और क्रॉप्स भी ग्रो करें. राइट. क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर रिटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप रोटेशन वो करते रहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. When crop rotation takes place, the fertility of soil increases. अगर आप एक ही फील्ड पे एक ही जगह पर वन ऑन द सेम लैंड यू ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलिटी जो है वो डेड हो जाएगी बेटा. अगर आप अलग अलग क्रॉप्स को ऑप्ट करोगे तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है. Crops like wheat, maize and barley are grown along with potatoes, turnip, peas and beans in rotation. This type of farming is practiced in Europe and North America on a large scale. Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa are the other countries where mixed farming is practiced. Alright, understood? Let's continue with plantation farming. As the name is suggesting itself, plantation means पौधे लगाना. Plantation farming is done on large land areas. It is practiced in countries which experience high annual temperature and receive high annual rainfall. What are the basic requirements for plantation farming? हमें क्या चाहिए basically? Skilled labor, huge capital investment, efficient and scientific methods and special implementations according to the requirement of the crops. Example, sugar cane and fruit plantations in Caribbean. बेटा ये जो plantation farming होती है it depends upon the weather of a particular place, right? Sugar cane is not possible to grow everywhere in the world because it need adequate amount of the temperature and the soil fertility in the same regard. That means fruit and vegetable, what is it required in plantation farming depends upon the climate and place. All right. So example include the sugarcane and fruit plantation in Caribbean and Latin America, rubber plantations in Malaysia, कॉफ़ी प्लांटेशंस इन ब्राज़ील. कॉफ़ी प्लांटेशन कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एंड हॉट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो कि ब्राज़ील में है, इसलिए वो वहाँ पर ग्रो करे जाती है. एंड इंडिया इज़ कंसिडर एज बेस्ट फॉर द टी प्लांटेशंस. ऑलराइट, let's continue with our dairy farming, the next topic which come under the commercial farming. Dairy farming caters to the need of milk and dairy products. The name itself is suggesting, the picture is given in your book, page number 177. डेयरी फार्मर्स ब्रीड एंड रेज एनिमल्स. वो लोग एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छा सीड्स और उनको बहुत अच्छी खाद देकर उनका अच्छे से वो ग्रो अप करते हैं एनिमल्स को, ताकि वो उनसे मिल्क फेच कर सकें, चीज़ बना सकें और डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकें. Dairy farmers breed and raise animals, chiefly cows, for the production of milk and milk product. Well, trained laborers, obviously, हर नॉर्मल लेबर ये वाला वर्क नहीं कर सकती बेटा, तो इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर्स जिनको डेयरी फार्मिंग का काम आता हो. वेल ट्रेंड लेबर इन एडिक्वेट नंबर इज़ द प्राइम रिक्विजिट. रिक्विजिट मतलब होता है प्राइम रिक्वायरमेंट. एज गुड केयर हैज़ टू बी टेकन फॉर द कैटल. ऑब्वियसली आपको काउज एंड बिफेरोज की बहुत अच्छी केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल फॉल सिक और उससे फिर मिल्क प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा. वो होगा ही नहीं, अगर वो अच्छा खाएंगी नहीं, उनकी अच्छे से केयर नहीं होगी तो आउटपुट भी नहीं आएगा. With the advancement in technology, machines are now used for milk feeding and cleaning the cattle. Dairy farming needs a lot of investment. The leading dairy farming countries are New Zealand, Australia and Denmark. In India,
डेयरी फार्मिंग इज़ अ स्मॉल स्केल एक्टिविटी. पर डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ प्रैक्टिस है इंडिया में? डू यू नो? इट्स इन गुजरात, in India. All right. The next is the pastoral farming, which is little bit different. In pastoral farming is the commercial rearing of livestock. Commercial जहाँ word आ जाता है, that means the work has been done to earn the profit. It has to be sold in market. All right. Animals like sheep. Why sheep is reared? To get wool. Why goat, yak and cow are reared? For meat and milk. Right? These animals are kept in large farm called ranches. Kindly underline this line. These animals are kept in large farms called ranches. The ranches are well kept and managed scientifically. Ranches is nothing better, थोड़ा सा shed होता है ऊपर और अलग अलग जो place होती है animal wise बनी होती है. Sheep will live in a pen, उनके लिए ranches बनी होती हैं, arrangement होता है proper, बीच में net लगी होती है और हर एनिमल को अलग रख के रेयर करा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है. दे हैव बीन टेकन केयर प्रॉपरली. The ranch is well kept and managed scientifically and it is practiced in the temperate grassland all over the world. All right, understood? Let's continue with our next topic. This is orchard farming, which comes under commercial farming. In orchard farming, fruits and nuts are grown in large areas. Fruits and nuts like grapes, apples, apricots, pears, orange, cherries, almonds, walnuts, cashew nuts are grown. Large orchards are found in Mediterranean regions like Portugal, Spain, France and in California, USA. See, growing nuts is not easy procedure. It needs lots of investment and the climatic condition to be favorable. आप हर जगह मतलब यू कांट ऑप्ट मतलब इंडिया के आप हर जगह पे नट्स ग्रो नहीं कर सकते. जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली जो नट्स होते हैं वो इंडिया में कश्मीर एंड कश्मीर वाले साइड में ज़्यादा ग्रोन अप होते हैं बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा फेवरेबल रहता है. ऑल राइट. Orchard farming is highly specialized form of commercial agriculture. The cultivation of grapes is called viticulture. Kindly underline, this is on book page number 177. Cultivation of grapes is called viticulture. The Mediterranean region is famous for wine production. Grapes का cultivation होता है and wine is made out of the grape. Wine is a fruit drink. It is not alcoholic at all. But उसमें alcoholic content तब बढ़ जाता है या प्रेजेंट हो जाता है तब वो बहुत ईयर्स पुरानी हो जाती है. व्हेन द वाइन विल बी वेरी मच ईयर ओल्डर तब उसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक कंटेंट बॉर्न हो जाता है बट स्टिल इट्स अ फ्रूट ड्रिंक. ऑर्चर्ड फार्मिंग इज एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर. द नेक्स्ट इज द हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर इज अ साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. In above orchard farming, we are talking about fruits and nuts. But in horticulture, we are talking about fruits and flowers. This type of farming is popular all over the world, especially in the European countries and in the USA. The Netherlands is the largest producer of tulips in the world. Tulips, the beautiful flower. In India, roses and marigolds are produced on a large scale. Am I clear? Great. Now the next content is market gardening. You can see the picture on the screen. This is the picture of horticulture, the scientific cultivation. You can see the arrangements of the growing of flowers and fruits in a systematic manner. जो fruits हैं वो आप above level में देख सकते हैं. They're grown like this and the flowers जो हैं आप you can see the flowers forming. आप देख सकते हैं नीचे अलग अलग sections हैं for different flowers. Now we comes to the last topic of this chapter. This is market gardening. It involves the cultivation of vegetable, fruits and flowers only for the urban markets. Means the cultivation has to be done in regard to sell in the urban market. But the urban market, the proper market. Not urban means होता है city area and rural is the village area. In this type of agriculture, land holding is usually small and mostly located on the outskirts of the city. Outskirts of the cities का मतलब होता है ये शहरी इलाके में शहर वाली जगहों पे नहीं होता, ये आउटस्कर्ट्स में होता है जहाँ पर बहुत खुला एरिया हो, खुला लैंड हो. Intensive agriculture is practiced and a lot of manual labor is required and is scientifically managed to get high yield. It is also known as truck farming.
इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं. एज वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय मार्केट्स बाई ट्रक्स. ऑब्वियसली तब लैंड में कल्टिवेशन होगी तो उस सामान को ट्रक्स में लोड करके दूसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा अर्बन मार्केट्स में. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रक फार्मिंग. Market gardening is prevalent in the densely populated regions of northwestern Europe, northwestern parts of USA. Market gardening is picking trends in India too. India में भी इसका बहुत ट्रेंड आता जा रहा है. Alright, so here we have completed the chapter agriculture. You can go through the reading. If there is any doubt, we'll discuss in the Zoom class. Till then, happy learning.